Hello everyone, hope everyone is doing good. Today we will see lecture number 30 from the subject numerical methods, and today's topic is a Bessel's formula. You know, for both the formulas, Bessel's formula as well as the Stirling's formula, both are used for estimating the values if the value is at the middle of the data set. And for both the formulas, the operator which we use is the forward difference operator. But we don't have to construct the forward difference table and the backward difference table whenever it comes to Bessels and Stirling's formula. We have to understand the concept of central difference table. It is almost the same, but the way we present it is somewhat different. And to create the differences will be different. So the first thing is we will see how to construct the central difference table for 5 data points. Okay, now see xi yi. So this is, and when I talk about the central difference table, that means we have to start at the center. Your x0 और x1 जहाँ से भी आप इंडेक्स स्टार्ट करना चाहते हैं, that depends on you. So above this will be x minus 1, थोड़ा सा दूर तो लिख लेते हैं, x minus 1, y minus 1, and this will be x minus 2, this will be y minus 2. So this is how we construct the table. This is x1 and this is y1, this is x2 and this is y2. How many? 1 2 3 4 and 5. इट डजेंट मैटर कि आप ऊपर से कितना लिखेंगे, नीचे से कितना लिखेंगे, आपका सेंटर में जो आएगा उसके बाद आप पार्टीशन कर सकते हैं. सो द फर्स्ट ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस विल बी, ओबियसली सेंट्रल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू राइट इट इन द सेंटर. पहला यहाँ डेल्टा वाई माइनस 2 विल बी इक्वल टू, हम क्या करते थे अभी तक नीचे से, ठीक है, हमारा जो इक्वली स्पेस होता था हम लिखते थे y2 माइनस y1. तो यहाँ पे उल्टा है, द डिफरेंस विल बी लाइक दिस, इट विल बी y माइनस 2 माइनस, नो द डिफरेंस वुड बी सेम, सॉरी, y माइनस 1 एंड ओ शिट, क्या हो गया, 1 सेकेंड. So this will be delta y minus 2 will be equal to y minus 1 minus y minus 2, like this. Okay, फिर यहाँ पे delta y minus 1 will be equal to y0 minus y minus 1. फिर यहाँ पे delta y0 will be equal to y1 minus y0. then यहाँ पे delta y1 will be equal to y2 minus y1. Okay, then further we can create the differences. So second order difference would be like this, इन दोनों के बीच में delta square y minus 2 will be equal to delta y minus 1 minus delta y minus 2. इन दोनों के बीच में delta square y minus 1 is equal to delta y0 minus delta y minus 1. then इन दोनों के बीच में delta square y0 will be equal to delta y1 minus delta y of 0. Okay, let me continue it on the next page. So then the third order delta cube yi will be like this, delta cube y minus 2 is equal to delta square y minus 1 minus delta square y minus 2. then one more difference we can create, delta cube y minus 1 will be equal to delta square y0
minus delta square y minus 1. We can create one more difference, so we can go up to the fourth order. It will be here. So जो ये सेंट्रल डिफरेंस होता है, ये डिफरेंसेस टेबल के सेंटर में आनी चाहिए. Delta 4 y minus 2 will be equal to delta cube y minus 1 minus delta cube y minus 2. So this is how we can construct the central difference table. Now coming towards the Bessels formula, we know that Gauss's forward interpolating formula is, what is that? Y of x is equal to y0 plus delta y0 times u plus delta square y minus 1 divided by 2 factorial u into u minus 1 plus delta cube y minus 1 divided by 3 factorial u into u plus 1 and u minus 1. You can write it either ways. It's not necessary to write it in the same way. Delta 4 y minus 2 divided by 4 factorial u plus 1 u minus 1 u minus 2 and so on. Just give me a second. Okay, so we know that this is the Gauss's forward interpolating formula. This is something which you have to remember, because we don't have to do the Gauss's interpolating formula and derive all these things, but I will tell you how to remember the formula and how we do it basically. Okay, now leave the first and second order as it is. ठीक है, जो भी हमारे पास सेकेंड ऑर्डर के बाद जितनी भी हमारे पास ऑड ऑर्डर्स हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है. सो वी हैव, लाइक इन दिस केस वी हैव डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1. ये किसके बराबर है? डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1, यहाँ टेबल में लिखे है. डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1 बराबर है डेल्टा स्क्वायर वाई 0. दैट इज़ द रीज़न वाई पहले मैंने कंस्ट्रक्ट टेबल किया ताकि आपको समझ में आए. तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इट इज़ इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर वाई 0 माइनस डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1. एंड फ्रॉम दिस आई कैन कैलकुलेट दिस टर्म. ठीक है, ये वाली टर्म मुझे निकालनी है, और ये टर्म निकालने के लिए मुझे ऑड टर्म की हेल्प ज़रूरत है. So delta square y minus 1 will be equal to delta square y0 minus delta cube y minus 1. Okay, similarly इवन टर्म को छोड़ के जो नेक्स्ट ऑड टर्म होगी वो क्या होगी? दैट विल बी डेल्टा 5 y minus 2, isn't it? Yes, that will be equal to delta y minus 1 delta 4 y minus 1 minus डेल्टा 4 y माइनस 2. ये आप बोलोगे ये कहाँ से आएगा? इफ़ यू विल एड द सिक्स्थ टर्म इन द सेंट्रल डिफरेंस टेबल यू कैन गेट इट ईजिली. सो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से मुझे कौन सी टर्म निकालनी है? दिस टर्म. सो डेल्टा 4 y माइनस 2 विल बी इक्वल टू डेल्टा 4 y माइनस 1 minus delta 5 y minus 2. Okay, so what we actually do is we split the alternate terms from second order forward difference. Okay, so split the alternate, थोड़ा सा ट्विस्टेड है ये, आसानी से समझ में नहीं आता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आए. ऑल्दो इट इज़ नॉट रिटन इन एनी ऑफ द बुक्स, दिस इज़ समथिंग विच आई हैव learned, studied from a mathematician by myself so that I can teach my students very well. तो हमें क्या करना है अब?
ये जो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है इसमें हमें क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर ऑनवर्ड्स, ठीक है, फ्रॉम दी वी हैव टू स्प्लिट द टर्म्स फ्रॉम सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। दैट मीन्स अगर मैं सेकेंड ऑर्डर को, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर को लीव करना है, ये दो टर्म्स जैसी हैं वैसी की वैसी ही लिखनी है, तो सेकेंड ऑर्डर ऑनवर्ड से मुझे क्या करना है, मगर ऑल्टरनेटली, दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर से जितनी भी इवन ऑर्डर्स हैं मुझे उनको स्प्लिट करना है। क्या करना है, स्प्लिट करना है। सो लेट वी स्प्लिट इट, y0 प्लस डेल्टा y0 टाइम्स u, क्योंकि ये दोनों हमें ऐसे ही रखने हैं एज इट इज़, प्लस अब सेकेंड ऑर्डर से स्प्लिट करना है तो दो हिस्सों में स्प्लिट करना है, सो वी कैन राइट हाफ ऑफ डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस हाफ ऑफ डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन, हो गया स्प्लिट। फिर इसका अपना u इंटू यू माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। थर्ड टर्म को, क्योंकि ऑल्टरनेट टर्म्स को करना है स्प्लिट सेकेंड ऑर्डर से, तो थर्ड टर्म वुड रिमेन एज इट इज़, वाई माइनस वन 3 फैक्टोरियल u प्लस वन u माइनस वन प्लस हाफ ऑफ डेल्टा फोर वाई माइनस टू प्लस हाफ ऑफ डेल्टा फोर वाई माइनस टू इंटू u प्लस वन u माइनस वन u माइनस टू एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल ओवर हेयर, ठीक है। Now what we have to do is, now after this step what we have to do is we have to make the first split to remain as it is, and for second split put the values, कौन से वैल्यूज पुट करोगे आप, लेट मी गिव द नंबरिंग्स टू दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2, दिस इज स्टेप नंबर 3, ओके। जो हमने स्टेप नंबर 2 एंड पुट द वैल्यूज वी कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 2, ठीक है, दिस इज द फोर्थ स्टेप। सो जो यहाँ पे हमने ये वैल्यूज़ निकाले, पहला स्प्लिट जो है उसको ऐसे कैसे रखना है, दूसरे स्प्लिट में वो वाले वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, सिंपल, ठीक है। सो हियर वी गो, y ऑफ x इज इक्वल टू y0 प्लस डेल्टा y0 टाइम्स u प्लस हाफ ऑफ डेल्टा स्क्वायर y माइनस वन प्लस substitute the values delta square y0 minus delta cube y minus 1 divided by 2 into u minus 1 divided by 2 factorial, ठीक है, प्लस डेल्टा क्यूब y minus 1 over 3 factorial u plus 1 into u minus 1 plus, now fourth step, half of a split, keep it as it is, then in this next split substitute the values, delta 4 y minus 1 minus delta 5 y minus 2 divided by 2, क्योंकि हाफ है स्प्लिट है, u plus 1 u minus 1 u minus 2 divided by 4 factorial and so on. So this is how you have to split it, okay. After that, this is step number 4, okay. Now in step number 5 we have to simplify this. Step number 5, after simplification we will get, हमें क्या मिलेगा, we will get a formula. I am going to write it over here. आप इसको simplify कीजिए घर पे and try to make it in the way, नहीं भी करेंगे, just remember the Bessels formula so that you can solve different questions, और
even in your examinations, maybe you only have to write the formula. It's not necessary you will only get the questions, but obviously there is no such derivation of this, so you can leave it as it is. U plus 1 into u minus 1, u minus 2 divided by 4 factorial, delta 4 y minus 2 plus delta 4 y minus 1. Okay, and then so on, divided by 2. So this formula is known as Bessel's formula. Okay, बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए. अब प्लस माइनस तो you can do it, I know that. So let us do few questions in the next video, both based on Stirling's and the Bessel's formula, so that you can understand it in better way. Thank you. Have a nice day ahead.